Hello and welcome. Welcome to a wonderful evening and in the show Stock Market Ki Baat MJ ke Saath. I know I owe you an explanation. It's been almost now 4 weeks after which I'm, restarting this show. The reason being I've been extensively traveling and the places where I've been to almost were remote, either the issue of signal or some or other, technical problem was there. So I could not, conduct this show. And I'm sure, you missed it out, right? And my sincere apologies. My commitment is that every Saturday 9 to 10 my time is dedicated to you and your questions, answering what to look forward for in the market and how the stock market could be a way to make regular money, or rather consistent money, by the virtue of trading or investing, either way, whether the short term trading or a long term trading or an investment, right? So that's what we are going to talk about. This there had been a lot of events, I'm sure each one of you is aware of, and I consider that you are aware of the fact that what are the consequences of the situation, like the war. Russia and Ukraine war has gone beyond a month now. So that's impacting the market. That has already impacted the market. Now the market has started discounting that. That's one aspect of it. Then the other, countries getting involved in it, be it Germany or be it Poland or be it US or UK, all that kind of news flow. That news flow is quite high, and that's also impacting the market, right? So let's have a look at Nifty chart before we take your questions. The most important aspect is let's look at the market, how the market has been behaving, right? All right. Now, if you look at this chart, right, and you could see that this is the impact, a negative impact of the war-like situation. And last 10-15 days, the market has taken a turnaround, and it has started, uh, you know, showing the symptom of the institutional buyers pumping in the money, right? And it has made a small uh, bullish island kind of pattern here. In fact, these two candles, as well as bullish, these four candles put together, as well as this bunch of candles, if you put together, they all are showing a bullish sign. Of course, now the market is in consolidation phase, and you would see the market is consolidating between 17,000 to 17,500 or so, right? So जब तक ये market इस range से बाहर नहीं निकलता है, तब तक of course buying की बहुत ज़्यादा opportunities यहाँ पे नहीं होंगी. What you can do possibly is that whenever the market is at 17,000 level, you can definitely pick up stocks of your choice, which are fundamentally good in trenches or in staggered manner, right? That's what I've been doing. Whenever there is a fall in the market, consistently the intraday profits have been flowing in back in the stocks. That's the way I make my living, as well as that's the way I create my day, right? Being a full-time trader, right, and investor. So that's what the market is showing. Beyond, if you look at 17,500 or 600, you would see the market would be taking a straight upturn, and that would be heading towards 18,600 again, right? So again, that will be a distribution zone. But before that, we also have another distribution zone somewhere around 18,000 to 18,300. So that also you need to take care of, right? So let me start taking your question, friends. My apologies once again to those of you who have joined late, that I could not conduct this show for almost 4 weeks, just because I've been traveling extensively in different states, different cities, and including different countries. All right, so let me take up your question. But before I take your question, why not to have a look at one of the segments which have been doing good, right? A sector which is Nifty Pharma, right? Nifty Pharma has corrected a lot.
Then I'll take up, after looking at the Nifty Pharma, I this afternoon I had studied some of the pharma stocks where I'm already invested in, plus the few of the nearer ones and dearer ones to those stocks. That means within the same market cap. And if you look at a Nifty Pharma has corrected for last few months, right? And to that extent that Nifty Pharma had reached close to 74%. There was a good correction from the COVID time. That means 24th March, that was the lowest, 24 March 2020. Then it made a high here, and after that the correction went on for a few months. Now it seems that the corrections are over and it has started giving a reversal. Nifty Pharma has now started making a similar kind of pattern what Nifty is making. Earlier it was going in north-south direction, right? So if you look at this, there seems to be a good possibility of Nifty Pharma reversing. And if you are in pharma stocks or you've been in negative, I think this is time, if you have chosen the right stocks which are contributing to Nifty Pharma, right? So there is no need to worry for those stocks. Those stocks will start giving you green signals very soon, right? So that's Nifty Pharma. We also saw some correction in auto, and the Nifty auto has also started showing sign of reversal. So that is also one needs to be thinking of, right? Now, let me take your question, friends. Okay. All right. So the first question comes from Nilesh. Nilesh, I really appreciate you being almost available in almost all the shows, and you put on a lot of good, important, and very intelligent questions. So, PIL Italica. PIL Italica. Okay, so I haven't studied that yet. So let me study that. PIL Italica Lifestyle. Plastic articles. So 1 minute. I need to look at the basic remote somewhere. All right. So that's into plastic articles, right? And if you look at it, it's a penny stock. Yeah, 9.6 rupees ka market prices ka. P already is a 51. Now, what does it mean? To earn 1 rupee from this company, company is asking you to invest 51 rupees. Point is whether it really makes sense, or are you having some information about this company that this company P is going to drop down, or this company is going to turn around, or it's going to be highly profitable. Okay, so यहाँ से ही एक question mark आ जाता है. While as this sector or this industry itself has a P of 29, this is already demanding close to 2 times. ROC 8 का है, ROE 6 का है, hardly doing well from that front. If you look at operating profit margin, that's around 6.5%, hardly anything. So it's unnecessarily asking a premium. In my view, you should not be paying that premium, right? Free cash flow. Now 226 crore की company है, 52 crore का minus में cash flow है. Again, that says not worth. If you look from the fair value perspective, इसकी 10 रुपए 11 रुपए के आसपास की भी fair value नहीं है. तो ऑलरेडी ये एक्सपेंसिव चल रहा है, लेके कोई मतलब नहीं है. Menon Bearing. So Menon Bearing seems to be part of automobile, right? Ancillary है, ट्रैक्टर्स वगैरह के लिए ये बेयरिंग्स बना रहा है. 20 रुपीज की बुक वैल्यू 90 चल रहा है. So how many times? Let's say around 5 times के आसपास में, 4 times पकड़ लो.
20 का स्टॉक का पी, इंडस्ट्री का अगेन 16 का पी है, सो ऑलरेडी थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया. आरओसी आरओ इज मोर देन 20, दैट्स गुड. डिविडेंड यील्ड भी है इसका 2.23%, नॉट बैड. डेट इज वेरी लेस 0.21%, दैट इज फेयरली गुड. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं. On that front, it sounds to be good. However, the stock PEG is already high. If you look at the fair value of the stock, somewhere it's trading close to its fair value, right? Free cash flow ठीक ठाक है, almost 10% का इसका 10% of the market cap free cash flow ये दे रही है, so it can be seen further from that perspective, right? Now, if you look at the chart of it, right? Let's say let's see from, if I see from chart, now this investing.com का चार्ट तो नहीं खुल रहा, at the same time मैं इसका दूसरा चार्ट लगाता हूं, ठीक है. Now if you see over a period of time, the price of this stock has already shot up. Let me see if I can enhance it. Right. Wait a minute, huh? शायद ओवर एक्सपैंड हो गया. All right, so it's moving above than 50 period moving average. If you want to take a position here, allow it to come down to somewhere around this level, which is almost 83 to 84. 83, 84 के प्राइस पे आप ले सकते हैं. Although you need to always look at what is your shareholding pattern, right? 71% ओनर्स हैं, प्रोमोटर्स हैं. एफआईआईज और डीआईएस का बड़ा छोटा सा स्टेक है, 26-27% पब्लिक है. सो थोड़ा स्केरी हूं, स्केरी है ये स्टॉक इस मामले में. इफ यू वांट टू टेक अ पोजीशन इन ऑटो, देयर माइट बी मोर कंपनीज वेयर यू कैन कंसिडर मेकिंग पोजीशंस, ठीक है. What good about the company? Debt has been reduced, expecting a good quarter. Dividend payout दिखा रहा है. Dividend payout मत देखें, हमेशा dividend yield देखें. तो 2.23 का dividend yield है, और सेक्टर में उतना ही बहुत ज्यादा dividend yield रहता नहीं है. बाकी ठीक ठाक लग रही कंपनी. आपका टारगेट शुड बी अराउंड 110 के आसपास का टारगेट रहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है. ओनली कंसर्न इज institutional investors are not participating here, so that also you need to look at. Moji, good evening. Your question is about HDFC Life. HDFC Life, let me share the chart. I think HDFC का chart हमारे पास में रहना चाहिए. Now, this chart is not opening up, so we'll have to go with HDFC Life. Insurance companies had given a good run already post-COVID. So it's almost trading 12-13 times, right? That's very, very expensive. 12.5 times, right? See, whenever the stocks is trading 12 times, 13 times, unless until the company has got sustainable business, and not only sustainable business, but meeting the expectation of the investor. Now, in a first company also we saw, to earn a 1 rupee, it was requiring almost 80 rupees investment. In this case, if you see, this company is asking for 94 rupees investment for earning 1 rupee in a year. So does that make sense?
to buy at this expensive price. ROC ROE ठीक ठाक है, कोई issue नहीं है. Unsplitted है share, fair enough. Book value 42 rupees की 520 पे चल रहा है, already बहुत expensive है. बाकी किसी भी पर्सपेक्टिव से आप देखोगे फ्री कैश फ्लो अच्छा है, नो इश्यूज अबाउट इट, बट मेरे ख्याल से एट दिस प्राइस स्टिल एट द प्राइस ऑफ 520 इट्स वेरी एक्सपेंसिव. Allow it to see the company has already made a death cross at 656 where it has given a signal to the price to cool off. मेरे ख्याल से you can buy up to 487 और मे बी 475 ये लेवल तक शायद ये वापस आए. इफ यू आर विलिंग टू वेट फॉर अ लॉन्गर होराइजन, बिकॉज एक बार कंपनी का प्राइस नीचे आ जाता है तो इजीली ऊपर जाता नहीं है, राइट? नीचे गिरना आसान होता है कंपनी के प्राइस को, बट ऊपर उठना उतना आसान नहीं होता है अनलेस अंटिल देयर इज अ बूस्ट इन इट. सो wait until 450 460 staggered manner में 2-5 स्टॉक अगर आप चाहें तो आप खरीद सकते हैं until the price goes to 400 or so. That will be the advice on it. HUL इंश्योरेंस सेक्टर अदरवाइज अच्छा है, कोई इश्यू नहीं है सेक्टर में. हिंद यूनिलीवर, let me take Hindi Unilever. I think Hindi Unilever में भी काफी corrections हुआ है, right? That always trades at a very high premium. अगर आप P देखेंगे हिंदी Unilever का तो 52 का P है, इंडस्ट्री का 49 है, so more or less इंडस्ट्री के P पे ट्रेड कर रहा है. ROC ROE एक्सेलेंट है, नो इश्यूज, मोर देन 30 के आसपास में है. डिविडेंड यील्ड है 1.6% का, नॉट बैड. जनरली this kind of companies don't pay much high yield, but HUL is all the time dividend paying company. The company has no issue. However, point is at what price you want to buy and at what price you will be able to stand for few years in this company. If you look at chart has already given you a selling signal, right? Now the price is 1953. अगर ये जगह पे देखें तो still there could be further fall. अगर आप चाहें तो 1750 के लेवल पे this might take a halt. 1750 के लेवल से या यहां से भी आप स्टैगर्ड मैनर में थोड़ा थोड़ा करके खरीदें. ट्रेंड एक साथ में मत खरीदें, लमसम कभी भी मत खरीदें. Allow the correction to happen on a longer time frame. Stock will come up, no issues at all. 2 months के हिसाब से HUL में मत देखें. Neither SDFC. These are elephants. If they are going down, they will go downhills. If they are going up, they will keep on going uphills, but in a very, very slow speed. So in this kind of company, don't look for 2 months target. Look for at least 6 months to 1 year to 2 years. Sania Shah ji ka sawal hai REC. Now, if you look at REC is trading almost at 125 के आसपास में, right? If you look at stock P is 2.5, मतलब आपको 2.5 रुपए लगाना है 1 रुपए कमाने के लिए. So that way it's excellent. If you look at the return on capital employed as well as ROE, return on equity 21%, which is good, but return on capital employed is very less, right? You know that this company gives a loan to electrification projects, right? A dividend yield of 10.5%, which is much, much more than your banks, 2 times more than the banks, right? फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपए की, कोई स्प्लिट नहीं है. अगर इन केस स्प्लिट होता है या बोनस मिलता है तो डेफिनेटली दैट विल बी अगेन अ like सोने पे सुहागा होगा, right? Like in between, if you look at similar company, Power Grid Corporation of India, that gave a bonus, right? So that way it is good. Now, if you see operating profit margins, almost 90% का operating profit margin, which is excellent for this kind of company, right? Interest coverage ratio कम है, obviously, because it is giving loans, right? It's taking money and giving the loans. So
डेट ज्यादा रहेगा, यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा रहेगा, फ्री कैश फ्लो माइनस में रहेगा. इफ यू कंसीडर the fair value of this stock, fair value of this stock is somewhere around 550 to 600 rupees. If you can hold it for a longer period of time, this stock can give you excellent rewards. If you look at the chart, let me make the chart bigger. All right. Now, if you look at the chart for quite some time, this has become a range bound, right? ये 118 119 के आसपास से मूव करता है और एज ऑफ नाउ 150 के आसपास तक जाके. So once this level is broken, 150 ka level is broken, you would consider it going towards 200. Now, how you can take entry in this stock? Let's say you want to buy 100 stocks. So for every drop of 2 rupees, you can buy 10 stocks, right? So in 10 rupees this thing, or 1 रुपए के ड्रॉप पे 10 स्टॉक आप खरीद सकते हैं. Make it in the same proportion for higher number of quantities. ठीक है? So don't worry for that. 10% का dividend yield is excellent. Anyway, your bank will also not give you that much. Now the next question from Neha comes for NMDC. Now NMDC अच्छा खासा पिट चुका हुआ स्टॉक है. अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टॉक है. दे आर इनटू आयरन और डायमंड्स, आयरन स्पॉन्ज, ये सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं. एन एक्सेलेंट कंपनी. अगेन 9.38% का डिविडेंड यील्ड है. तो डिविडेंड के मामले में तो गवर्नमेंट कंपनीज, इफ दे आर मेकिंग गुड प्रॉफिट, दे विल शेयर द डिविडेंड विद गवर्नमेंट. एट द सेम टाइम उनकी ये भी मजबूरी है, यू बीइंग अ शेयर होल्डर, दे विल हैव टू गिव पार्ट ऑफ दैट profit or dividend to you as well, right? Now, if you see from return on capital employed is almost 30%. Return on equity is almost 22%. So excellent that way. Operating profit margins are almost 52% for any manufacturing company. 52% ka, operating profit margin is a very good profit margin, right? So that's good. 46,000 crore की market cap की company है, while as already it has got 8,470 crore का cash flow इसके पास में positive में है. Again, that is a very good aspect. If you see from the fair value perspective, 600 650 का fair value है इस stock का. It's just trading at it's a book value. The only thing is, in this kind of stock, it will take much longer horizon to come up. If you see, the stock has been correcting and being a range bound, right? So if you want to take a fresh entry, still the price is almost 150 के आसपास में. Good price है, आपको कोई इश्यू नहीं है. यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं 157 पे. इवन थोड़ा बहुत करेक्शन होता है 150 तक खरीद ले, कोई इश्यू नहीं है, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज स्विंग लॉन्ग के लिए. स्विंग लॉन्ग भी आप ले सकते हो. 190 से 200 रुपीस के आसपास का इसका स्विंग ट्रेड का आपका टारगेट होना चाहिए. द टाइम फ्रेम कुड बी एज लॉन्ग एज द मार्केट गोज टूवर्ड्स 18,500. 18,000 के आसपास में मार्केट भी 200 के आसपास में टच कर जाएगा. सो दैट वे नो इश्यूज एट ऑल. डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है यहाँ पे, इसके लिए आपको शायद दिखेगा कि प्रोमोटर ने थोड़ा स्टॉक कम किया है यहाँ पे, राइट? But still promoter holding is 61%. Now, if you look at shareholding patterns, right? 61% promoters हैं. FIs ने stake बढ़ाया है यहाँ पे 5.2%. In fact, from March 19 के perspective से बढ़ा है, लेकिन September 21 के perspective से December 21 में कम हुआ है. But that's okay, not a big difference. It's just a 0.5%. DIs को देखेंगे 18.84 से 21.84, so almost 3% they have increased, and public has also increased. Now public has increased from 5% to 12%, right? So स्टेबल शेयर होल्डिंग पैटर्न है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना शेयर्स थोड़ा बेचा है, विच इज फेयर, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शेयर्स कैश की जरूरत पड़ती है अलग अलग स्कीम में, बिजनेस एक्सपैंड करने में, कंट्री रन करने में, गवर्नमेंट रन करने में. बिकॉज ऑफ दैट इट मे डाइल्यूट इट्स
stake in various government companies, right, including LIC. The IPO is yet to be coming. So that is about NMDC. Fairly good company. You can take a entry, no issues on that. Next question from Shruti Singh. Petronet for long-term investment. See, Petronet के साथ में क्या हो रहा है? What will happen if the oil prices keep on increasing? So इन कंपनीज का जो भी पेट्रोलियम वाले कंपनीज हैं या गैस वाले कंपनीज हैं, अगर इनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली इनके प्रॉफिट मार्जिन्स मार खाना चालू कर देंगे, राइट? सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. द stock has been correcting because the oil prices have been shooting, right? Oil prices have shot almost to $125 per barrel. So उसका impact है यहाँ पे. Otherwise कंपनी के फंडामेंटल के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो अभी 2.25 टाइम्स बुक वैल्यू के ट्रेड हो रही है. स्टॉक पी 19 का है, इंडस्ट्री का पी 9 का स्टॉक पी है इसका, जबकि 11 का इंडस्ट्री का पी है. सो अंडर वैल्यूड है दैट वे. ROC and ROE are more than 20. ROE 26% का है, ROCE is almost 29%. So that way it is good. Mr. Warren Buffett says 20% के ऊपर. These criteria are absolutely fabulous. So यहाँ पे ठीक ठाक है ये. Operating profit margin 11.5% का, that is less, but in petroleum companies 12, 14, 15% का operating profit margin is supposed to be really very good. So nothing much to worry about that aspect. Cost ज्यादा है यहाँ पे. Now 29,000 crore के आसपास की market cap है, almost 50%, 45 to 50% का इसके पास में free cash flow है. So now if you buy the stake in a company, what you are doing, free cash में भी आपका एक हिस्सा है, right? So if you see from the fair value perspective, so around 450 to 500 की fair value है, which is available to you at 196 right now. मेरे ख्याल से position बनाना चालू कर सकते हैं on further. देखो, यूक्रेन और रशिया का इश्यू बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेगा. Now the world is not in a situation where world wars will happen or the wars can be fought for a long period of time. Economies start suffering. That's what's been happening already. Inflation is increasing and almost every country wants the war to stop. The moment war stops, oil will start coming to normal $60, $65 or $70. That's the time when these companies will start taking, raw material at much lesser price, and obviously they will make more money. That's where the real value lies. So at the time of crisis you would see the stocks are available at good prices. I think if the fundamentals are good, there should be nothing which is stopping you to start taking positions. You can start buying stocks in small quantities. Now, if you see, promoters are 50%. FIIs, despite FIIs have been in a selling spree for a long period of time, Petronet में FIIs ने 2% stake बढ़ाया है, right? In fact, 25% थे 2019 में. As of now, they are 34%. Overall, 9% का stake उन्होंने बढ़ाया है. DIs ने, of course, 11% से 3% किया है, so they have reduced it. And public has been consistently at the same level of 13% to 12.7%. So more or less stable है जो shareholding patterns हैं. Once the oil crisis is over, this stock will start paying you good. So no issues on that front. प्रमोद जी का सवाल है AB Capital, Aditya Birla Capital, let's say. Okay. So 60 rupees ka book value available at less than 2 times. Sounds to be good. Stock P 16, industry P 25, ROC ROE 8% के आसपास में, not very good. But at the same time ये जो भी financial sector में companies काम करते हैं, इनके ROC ROE बहुत ज़्यादा नहीं होते. Debt to equity ratio is also fine, 3.54% है.
not very high. फ्री कैश फ्लो तो माइनस में ही होना है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम है इसका, 35% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है. आई थिंक मोर और लेस 165 170 के आसपास का इसका फेयर वैल्यू है. यू कैन थिंक ऑफ टेकिंग एंट्रीज हेयर. But as of now, stock is under pressure, right? So you might see the stock coming towards 100 also. So कम quantities में आप लेना चालू कर सकते हैं यहाँ पे. Fundamentally sounds to be ठीक ठाक company, no issues. Let's see who are the shareholders here. Promoter 71, FI consistent है 2.5% और quarter to 3% पे. DIs ने increase किया यहाँ पे 11.5% है and public is so एक पब्लिक कांस्टेंट है. सो ठीक ठाक शेयर होल्डिंग पैटर्न है. बिरला ग्रुप की कंपनी, सो नीड नॉट टू वरी फ्रॉम द मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, राइट? सो दैट वे साउंड्स टू बी ओके. जानवी का सवाल है इंद्रप्रस्थ गैस, राइट? सो विद अगेन जितने भी ये गैस कंपनीज हैं, एमजीएल होने दो या आईजीएल होने दो, है ना, ये सारे कंपनीज हैं डिस्ट्रीब्यूशन में. जैसे आईजीएल की बात करते हैं, इंद्रप्रस्थ गैस की. नाउ इंद्रप्रस्थ सप्लाइज द डोमेस्टिक गैस टू एनसीआर रीजन, मतलब दिल्ली, नोएडा, ये सब एरिया में इनका, फरीदाबाद, गुरुग्राम, इन सब जगहों पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन है गैस का. Irrespective of where the oil prices go, where the gas prices go, consumption of oil, consumption of gas, the households have to use, right? Restaurant को use करना ही पड़ने वाला है gas. So in such a scenario, you would see कि business कम नहीं होने वाला है इनका. हाँ, गैस का प्राइस ये रोज नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि प्राइस बढ़ाएंगे तो महीने में ही बढ़ा सकते हैं ना, बिल तो महीने में ही बनता है, राइट? तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा, क्योंकि इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ी तो इनकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है. बट जस्ट थिंक ऑफ 97 रुपीज रफली, अगर मैं 100 रुपीज की बुक वैल्यू पकड़ूं तो ये अभी 3.7 टाइम्स पे अवेलेबल है, विच इज फेयरली गुड फॉर गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज. मेरे ख्याल से अच्छा प्राइस है. 1% का डिविडेंड यील्ड है. So that way, if you look at ROC and ROE almost 20 के आसपास में, which is good. Operating profit margin 25% का अच्छा है. दूसरा, इन बिजनेसेस की एक अच्छी चीज ये है कि एक बार यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया. करना क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब, इनको गैस डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन बिछानी है, सोसाइटी टू सोसाइटी, बिल्डिंग टू बिल्डिंग, कॉलोनी टू कॉलोनी. इसका मतलब एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया तो 25-30 साल तक तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ भी होने से रहा, राइट? उसके बाद में आपको वो नल के पानी के जैसे गैस छोड़नी है और बिलिंग करनी है, राइट? मीटर तो आप लगा ही चुके हो. और छोटा मोटा एक्सपेंशन जो दूसरे सिटीज में होएगा या नजदीक के कॉलोनीज में होएगा, वो करना है आपको. बट जो मेजर कैपेक्स है वो हो चुका है इनका. सो दैट वे अगेन these are highly profitable companies. You can go ahead at this price, although the price has gone below 50 period moving average, below 200 period moving average. मेरे ख्याल से एक रिवर्सल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. और एनी प्राइस 350 onwards is a very good price. In fact, ये 330 तक आया था. I'm invested in this company, Indraprastha, as well as Mahanagar Gas, and of course, I've seen my portfolio or my stock going in red, but I'd been buying it in a very staggered manner, as I suggest to you. So as of now, I am at no profit, no loss. But definitely, once it goes to the level of 500, if my average price is, let's say, around the 375, so 125 के आसपास का profit होता है, which is absolutely fabulous. 30% plus होएगी. And if it goes to all-time high of almost 570, so you can see that would have almost doubled, right? So not bad deal. You can always go for it. Similarly, Mahanagar Gas में भी आप position बना सकते हो. In comparison with Indraprasth Gas, I prefer Mahanagar Gas, although I'm invested in both. India Bull Housing. Okay. India Bull Housing. If you look at India Bull Housing,
You will have to go through the company's history, right? This company used to belong to Mr. Samir Gehlot, and a lot of corporate governance issues once upon a time. एक 1400 रुपए के आसपास में इसने स्टॉक ने टच किया था, बट उसके बाद में जैसे ही नेगेटिविटी स्टार्ट हुई यहाँ पे, इट हैज नेवर एवर सीन द ब्राइट लाइट अगेन, राइट? 1000 के नीचे गया तो फिर उसके बाद में ये नीचे ही नीचे जाता रहा. इफ यू लुक एट द बुक वैल्यू, 331 रुपीज की बुक वैल्यू है. 50% बुक वैल्यू के डिस्काउंट में चल रहा है. इनफैक्ट नाउ समीर गहलोत इज नो मोर even a promoter. He had 20% stake. Out of that, 10% he sold, and जो 10% उनके पास में बचा हुआ स्टॉक था, शेयर्स था, he has requested to remove his name from the promoters, right? Now, once that happens, why the stock fall? Just because of the corporate governance issues and the bad news. If you see, 7,256 crore की market cap है, while its free cash flow itself is a 12,554 crore. That's amazing, isn't it? If you see from the perspective of ROC, ROE, of course, ROE is almost 7% and ROC is 9%. कम है, but dividend yield alone is almost 6% for this stock, right? बैंक के बराबर तो dividend ही आपको ये दे रही है. So that way, it seems to be fair from stocks fair value perspective. एक 400 रुपए के आसपास में इसका fair value है, which is good enough, right? अगर आपको 400 रुपए तक जाने वाला स्टॉक 156 टाइम में 156 रुपीस में मिल रहा है, not bad, but still it is going through the bad phase. ये कब रिवर्सल लेगा, no one knows, but if you can hold it for 2-3 years period, definitely it will double your money. The stock that way is fair enough. And now the stock, इसका जो मेजर प्रमोटर होएगा ना, एज ऑफ नाउ तो अभी भी समीर गहलोत का ही नाम दिखा रहा है, बट दिस नेम शुड बी आउट वेरी क्विकली, राइट? नाउ who will be the real owner of it? You need to look at it. FIs are holding करीब 29%, right? So in FIs में अगर आप देखेंगे, so there are various institutional investors who have invested here heavily, and I think somebody is going to have more than 15% stake here. As of now, तो नहीं दिखा रहा है यहाँ पे entry. The moment that happens, that company will start managing it. So I see the turnaround of this company. Only thing is the data is still not been clear here. There are a lot of conversation about turning around this company, but जो FIs और DIs का स्टेक है वो तो ऑलरेडी बहुत अच्छा है ही है. यहाँ पे पब्लिक है ऑलमोस्ट 43% बैठी हुई है. पब्लिक ने काफी बड़ा स्टेक यहाँ पे ले लिया है, राइट? नाउ अनलेस until some big name emerges from here and that big name starts managing the day-to-day affair of the company, the day that happens, you will see this stock will start jumping up very fast. So if you have additional capital, you can invest in a staggered manner again, in a small lots. Let's say अगर आपको 100 स्टॉक खरीदना है, दो 5 करके आप ये खरीद सकते हैं when the stock is rising. So no issues on that. सोनिया जी का सवाल है C8 से लेके, right? Let me take that question. Okay, C8 ने काफी करेक्शन देखी इसके स्टॉक में, राइट? दैट वाज ऑलरेडी ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 1500 रुपीस के आसपास में, एंड अगर आप बुक वैल्यू देखोगे तो 819 है. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड व्हेन ऑलमोस्ट ऑल द मैन्युफैक्चरर हैड शट डाउन देयर प्लांट, C8 वाज द ओनली वन कंपनी व्हिच वाज मैन्युफैक्चरिंग द टायर्स, राइट? नाउ इफ यू सी स्टॉक P 19 के आसपास का है, एंड मोर और लेस सेम इज द इंडस्ट्री P. So fairly priced है that way. If you see from ROC, ROE, तो almost 15 के आसपास में है दोनों. Fairly good, 2% के आसपास में dividend yield है. Again, that is also fine. If you see from the perspective of the fair value, so fair value ये stock की करीब ना 1200-1300 के आसपास की fair value आती है. So that way the stock is undervalued. Now, if you see the chart of this stock,
it's again going towards its a pre-COVID level, right? तो pre-COVID level क्या था इस स्टॉक का? One बेटा, I think my mouse is stuck. Pre-COVID level इसका friends 868. I don't know, यहाँ पे लाइन चार्ट में जनरली इजीली नहीं दिखता है. हाँ, 733 का था, राइट? सो ऑलरेडी अच्छा करेक्शन यहाँ पे आ गया है. यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर पोजीशन. ओनली थिंग इज यू नीड टू होल्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. नाउ ऑटोमोबाइल होने दो, मेटल होने दो, टायर्स होने दो, ये सब सिक्लिकल सेक्टर के स्टॉक है. सम टाइम यू मे हैव टू वेट 2 to 3 years. इफ यू डू दैट, डेफिनेटली दिस विल गिव यू अ वेरी गुड रिटर्न. ठीक है, प्रोमोटर 47% है, एफआईज 22% है, डीआईज ने स्टेक बढ़ाया है 12%, 13% के आसपास में है, पब्लिक डिसेंटली 17.5% पे. सो दैट वे यू शुड हैव अ होल्डिंग कैपेसिटी टू लुक फॉर दिस स्टॉक. ठीक है, सो दैट वे आप छोटे छोटे क्वांटिटीज में ये स्टॉक को ले सकते हैं. Next is from Shruti Singh. ITC is going up like anything nowadays. What is your view on it? I am already invested in. What will be next resistance level for it? See, ITC is most undervalued company. Now, जो ESG group है, which governs some of the norms for big investors. So they say that it belongs to a sin industry. That's where the valuation of this company are not really given very good. So investor generally जो institutional investors है वो कुछ rules को follow करते हैं investment में. That's where they were not investing much in FIs. And as I always say that unless until there are institutional investors buying in bulk or holding in a big quantities, the price does not sustain. So what has happened with the ITC is lately we have seen the institutional investors have started buying in. It seems कि उन्होंने जो ESG वाले रूल्स हैं वो शायद ताक पे रख दिए हैं. सो थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन हो रहा है. दूसरा 4.25% का इसका डिविडेंड यील्ड है, विच इज वेरी गुड. 253 पे चल रहा है स्टॉक. 185 190 के टाइम पे मैंने बोला था ये स्टॉक आप खरीद सकते हैं. मोस्टली ये 215 से 230 240 के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है. फेयर वैल्यू के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ठीक ठाक फेयर वैल्यू है इसकी, 350 के आसपास की इसकी फेयर वैल्यू है. और अगर आप चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो ऑलरेडी ये अपने रेजिस्टेंस जोन में आ गया. सो लेट्स से 256 का इसका रेजिस्टेंस जोन था, 253 में ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन में है. सो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है. अगर आप इन्वेस्टेड हो, पार्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हो. इन केस अगर 230 के साइड में फिर जाता है ये वापस, तो आप यहाँ पे वापस से एंट्री ले सकते हो या पोजीशन बढ़ा सकते हो. आपका टारगेट एक्चुअली जो पहला टारगेट होना चाहिए 300 रुपए के आसपास का होना चाहिए ये स्टॉक में. ठीक है, योगेश राउत जी का सवाल है, व्हाट इज योर व्यू ऑन एनटीपीसी एंड मैरिको फॉर मार्च? सो Yogesh is typically asking a question about futures FNO. So Yogesh, future का perspective मत देखो, ये देखो कि that means you are trying to anticipate the market. Dangerous zone है वो, right? मार्च 22 की एक्सपायरी में हार्डली कुछ दिन है. कितने दिन है? मतलब 4 दिन बचे हुए हैं. 4 दिन बचे हुए, 4 दिन में स्टॉक को कहां लेके जाना चाहते हो, पहली चीज. दूसरा, मेरे पास में ना अभी ये चार्ट में एनटीपीसी अगर खुलता है तो देखते हैं, फिर भी थोड़ा इजी होता है. अगर 4 दिन का मूव देखना है तो यू रियली need to look at 2-hour chart. ठीक है, so let me make it on a 2-hour. so 2-hour में मुझे ना एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो कि अच्छे से ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन
फिर मार्केट साइडवेज हो गई है. सो इट माइट कम टू 141 और 140 के आसपास में इट शुड कीप अ टैब ऑन पीएसयू. निफ्टी पीएसयू को देखो, अगर निफ्टी पीएसयू भी ऐसे ही दिखा रहा है, थोड़ा बुलिश दिख रहा है, तो देन 140 के आसपास में यू कैन एक्सपेक्ट इट टू बी इन अ वीक्स पीरियड, राइट. मैरिको का देखते हैं, अगर मैरिको का चार्ट हमको दिखता है तो यहाँ पे 1 minute, it's taking time to load the charts today. All right, so Marico is a range bound, right? ये काफी टाइम पहले हमने ये टारगेट दिया था जब भी Marico was trading in this range, right? It was expensive that time. अभी देखो ये जोन टूटा है इसका. इनफैक्ट अभी भी ये सपोर्ट के जोन में है, बट जिस टाइप का पैटर्न बनाया है इसने, स्टिल इट सीम्स टू बी फर्दर गोइंग डाउन टूवर्ड्स 466 के आसपास में, 460 के आसपास में जाने की तैयारी कर रही है. So you can expect 10-15 points further drop. 3 times it has already hit on this level, and the way the candlestick patterns are there, थोड़ा dangerous ही लग रहा है. Downside थोड़ा ज्यादा दिख रही है इसमें. Wait and allow it to break 470 level. If 470 level break करता है ये, now ये gap था, this has been filled up. Right, this gap has been filled up. See, before further going down, it may consolidate for few days, and then further it may come down to this level, 465 के level पे. So watch out on 2 hours chart, you guys. That will help you because you are trying to time the market. Majority of industries having sales target as well as financial year. उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, और महीने के लास्ट के 4 दिन में कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेता है, बड़े डिसीजन पहले ले लिए होते हैं. योगेश, so let me take this last question, friends. It's a general question. Is the right time to start adding up in the portfolio, or should we wait for more correction in coming time? See, it is not possible to predict whether Nifty will further go down. मेरे ख्याल से निफ्टी का जो बॉटम है वो 17,000 के आसपास में है. यहां से फर्दर डाउन इसको नहीं जाना चाहिए, कम से कम आने वाले 2-3 महीने में, क्योंकि जो भी वर्स्ट था. सी, नाउ निफ्टी हैज सीन Nifty has seen the downside, the war-like situation that could have been worse to worse for the market. सबसे बड़ा fear होता है, right? अच्छा, Nifty has also seen crude selling at $130, right? तो उससे भी worst कुछ नहीं हो सकता है, और कितना दूर तक जाएगा. Now I think from here Nifty should have a good time. So if you want to sorry, मैंने Nifty Pharma लगा दिया. So whenever Nifty goes down to 17,000, you can think of buying Nifty ETFs, Bank Nifty ETFs, and your stocks which are having a beta of close to 1.8 to 1.2 के beta वाले जो stock हैं, वो stock में आप entry लगा सकते हो, वो या add कर सकते हो, because they will move with Nifty. ठीक है, some more time it may consolidate. जिस हिसाब से ये माहौल बना रहा है वो कंसोलिडेशन का पैटर्न है यहाँ पे. तो 17,000 तक आता है तो डेफिनेटली आप छोटे-छोटे करके पोजीशन बनाना चालू कर सकते हैं. All right, so I hope your questions have been answered. Some more questions if left out, I'll take on a next Saturday. Henceforth, every Saturday I'll be available to you. Immediate traveling मेरी नहीं है, especially to the remote areas. So definitely I would be available to you to look at stock market के बाद MJ के साथ. Wish you good luck, friends, and wish you happy trading and happy investing. Good night.